কাৰণ যিজনী মানুহক ছাৰে এইখিনি ট্ৰিটমেণ্ট কৰিছে পাটনাত নিব লাগে বুলি কৈ দিছিলে, তেনেস্থলতো নিনি কিনে ইয়াত যে ছাৰে সেইটো মোক সাহস দিলে কৰিম বুলি, এইকাৰণে মোৰ কাৰণে শ্ৰাদ্ধ বহুত বহুত ভগৱান মই নমস্কাৰ কৰি গৈছোঁ তেখেতক। 2 নম্বৰ ছাদৰ পৰা তলত পৰি গৈছিলে। 2 নম্বৰ ছাদৰ পৰা তলত পৰি গৈছিলে। নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছোঁ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ। মই আজি গুৱাহাটীৰ বেলতলাৰ ছাৰ্ভেৰ চন্দন নগৰত আহি উপস্থিত হৈছোঁহি আৰু ইয়াত যিখন হস্পিটেলত মই আহিছোঁ সেইখন হৈছে ড্ৰিমছ হস্পিটেল আৰু পাটনা অৰ্থপেডিক হস্পিটেল বুলি তেওঁলোকে ইয়াত নামফলক আঁৰি থৈ দিছে। আৰু ড্ৰিমছ হস্পিটেল বা পাটনা অৰ্থপেডিক হস্পিটেলে ইয়াত বিভিন্ন চিকিৎসা কৰে। এই চিকিৎসালয়খনৰ বিশেষত্ব হৈছে যে গুৱাহাটীৰ ভিতৰত এইখনেই অন্যতম এখন চিকিৎসালয়, যিখন চিকিৎসালয়ত ইণ্টাৰভেনশ্যনেল পেইন স্পেচিয়েলিষ্ট আছে, লগতে তেওঁলোকৰ অৰ্থপেডিক ছাৰ্জন আছে। যি অৰ্থপেডিক ছাৰ্জনৰ বাবে আপোনালোকে পূৰ্বে পাটনাত যাবলগীয়া হয়, সেই অৰ্থপেডিক ছাৰ্জন ইয়াত 24/7 আপোনালোকে পাব। বা যি কেঞ্চাৰৰ স্পেচিয়েলাইজড ডক্টৰৰ বাবে আপোনালোকে চেন্নাইত যাবলগীয়া হয়, সেই কেঞ্চাৰৰ স্পেচিয়েলাইজড ডক্টৰ আপোনালোকে ইয়াতে পাব। এইখনেই হৈছে ড্ৰিমছ হস্পিটেল। আৰু মই এই ড্ৰিমছ হস্পিটেলৰ যিসকল বিশেষ ব্যক্তি, বিশেষ চিকিৎসক, মই তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিম। ইয়াত বহু লোক আছে, সেইসকল লোকৰ কথাটো মই ইতিমধ্যে ক'লোৱেই। সাধাৰণ লোকসকল অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহে, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহে। আৰু মই ইয়াৰে এজন বিশেষ চিকিৎসক ডক্টৰ ভৱেন চন্দ্ৰ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ কাষলৈ যাব বিচাৰিছোঁ। ইণ্টাৰভেনশ্যনেল পেইন স্পেচিয়েলিষ্ট হয় তেখেত। ছাৰ, স্বাগতম জনাইছোঁ। আপুনি এগৰাকী অন্যতম সঞ্চালকো হয় ড্ৰিমছ হস্পিটেলৰ। আৰু আমি জানো যে ড্ৰিমছ হস্পিটেলৰ বিশেষত্ব, মই ইতিমধ্যে অলপ আভাস দিছোঁ যে আগতে আমাৰ ৰোগীসকল, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ লোকসকল বিহাৰত যাবলগীয়া হয় হাড়ৰ চিকিৎসাৰ বাবে, বা কেঞ্চাৰৰ চিকিৎসাৰ বাবে চেন্নাইত যাবলগীয়া হয়। কিন্তু এইখন হস্পিটেলত সকলো চিকিৎসকক একেলগে পাব। লগতে যিকোনো পেইন ৰিলেটেড সমস্যা, কেঞ্চাৰৰ পাছৰ পেইনেই হওক অথবা আন যিকোনো পেইন ৰিলেটেড সমস্যা, বিষ বেদনা শৰীৰৰ, তাৰ বাবেতো আপুনি আছে। অলপ কৈ দিয়কচোন আপোনালোকৰ কামটো কেনেকুৱা? হয়, ইয়াতে মই ডক্টৰ ভৱেন বড়ো, ইণ্টাৰভেনশ্যনেল পেইন স্পেচিয়েলিষ্ট। মই 2015 দাৰদিয়া পেইন ক্লিনিকৰ পৰা ইণ্টাৰভেনশ্যনেল পেইন মেনেজমেণ্টৰ ফেলোশ্বিপ কৰিছোঁ। এতিয়া আমাৰ ইয়াত হয় ইণ্টাৰভেনশ্যনেল পেইন মেনেজমেণ্টৰ গোটেইখিনি সা সুবিধা আছে। স্পেচিয়েলি আমি আজিকালি ৰেডিঅ' ফ্ৰিকুৱেঞ্চি এব্লেশ্যনৰ ওপৰত বেছিকৈ গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছোঁ। সকলো ধৰণৰ বিষয়ৰ চিকিৎসা ইয়াত কৰা হয়, ষ্টাৰ্টিং ফ্ৰম মাইগ্ৰেইন, শ্লিপ ডিছ, ফ্ৰজেন শ্বল্ডাৰ, অষ্টিয়াৰিটিছ নি, তাৰপিছতে আমাৰ ট্ৰাইজেমিনেল নিউৰেলজিয়া, গোটেইখিনি চিকিৎসা আমাৰ কৰা হয়। আৰু গোটেই চিকিৎসাবিলাক আমি আল্ট্ৰাচাউণ্ড গাইডেড, এয়া হ'ল আল্ট্ৰাচাউণ্ড মেচিনবোৰ, আল্ট্ৰাচাউণ্ড গাইডেড। আৰু নহ'লে আমি অতিৰ ভিতৰত এক্সৰেৰ সহায়ত আমি পেইন জেনেৰেটৰ বা যিবিলাক আমাৰ বিষৰ উৎপত্তিস্থলটো উলিয়াই লৈ তেনেধৰণে এটা হলিষ্টিক আমাৰ এপ্ৰ'চত ইয়াৰ পেইন মেনেজমেণ্টৰ চিকিৎসাটো কৰা হয়। মানে এতিয়া আমি জানো ছাৰ যে বহুতে বাহিৰত গৈ চিকিৎসা কৰে। আমি সাধাৰণতে বহুতে কোৱা শুনো যে অসমৰ বাহিৰত চিকিৎসা বেছি ভাল বুলি, অসমতকৈও। কিন্তু আমি এইটো কথা গম পোৱা নাছিলোঁ ইমান দিনে যে গুৱাহাটীৰ ভিতৰচৰাতে ড্ৰিমছ নামৰ এখন হস্পিটেল আছে, পাটনা অৰ্থপেডিক হস্পিটেল বুলি আছে, চন্দন নগৰত ছাৰ্ভেত আছে। মানে গোটেই বাহিৰত যেনেধৰণৰ চিকিৎসা হয়, ঠিক অনুৰূপ চিকিৎসা ইয়াতেই হ'ব, নহয়নে? হয়, আমাৰ ইয়াতে ট্ৰমাৰ কাৰণে আমাৰ ডক্টৰ ৰমন কুমাৰ বুলি, তেখেত পাটনাৰ ট্ৰমা বা অৰ্থপেডিক চাৰ্জাৰীৰ কাৰণে জইণ্ট ৰিপ্লেচমেণ্ট তেখেতে কৰে, ইয়াতে তেওঁ থাকে। চ' এনি ট্ৰমা, এনি ফ্ৰেকচাৰ, এইবিলাক চিকিৎসা তেওঁ কৰে। আৰু দ্বিতীয়তে আমাৰ কেঞ্চাৰৰ কাৰণে, কেঞ্চাৰ শ্ৰীনিবাদ বানোদ বুলি, তেখেত হ'ল MCS চাৰ্জিকেল অংক'লজি, তেখেতে ইয়াতে কেঞ্চাৰ চাৰ্জাৰী এইবিলাক ইয়াতে কৰে তেওঁ। ড্ৰিমছ হস্পিটেলৰ এটা বিশেষত্ব মই কৈছোঁ ইতিমধ্যে, কেঞ্চাৰৰ বাবে, বিশেষকৈ যি কেঞ্চাৰৰ বাবে আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰোগীসকল চেন্নাইত যায়, সেইসকলৰ এতিয়া চেন্নাইত যোৱা দৰকাৰ নাই। কাৰণ এগৰাকী বিশেষ চিকিৎসক ডক্টৰ শ্ৰীনিবাস বেনোদ, তেওঁৰ কথা যদি কওঁ, পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ইনষ্টিটিউট চণ্ডীগড়ৰ পৰা তেওঁ পাছ আউট, আৰু তেখেত ইয়াত আছে। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ सर थोड़ा बोलिए तो कैंसर का स्पेशलाइजेशन यहाँ पर है ड्रीम्स हॉस्पिटल में। लोग बाहर जाते हैं, चेन्नई जाते हैं, अभी चेन्नई जाने की ज़रूरत है या नहीं? नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रीनिवास बानोद, मैं कंसल्टेंट सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, एक कैंसर सर्जन है। मैं काफ़ी दिनों से ड्रीम्स हॉस्पिटल से एसोसिएट हुआ हूँ। बहुत लोग पहले सोचता था कि कैंसर का कोई आंसर नहीं है, या कैंसर होने से लोग मर ही जाता है, उनका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। बट ऐसा नहीं है, आजकल कैंसर का ट्रीटमेंट में बहुत एडवांसमेंट हुआ है। तो बहुत लोग अगर अर्ली स्टेजेस में आता है तो उनका ट्रीटमेंट अच्छा होता है और उनका आउटकम भी अच्छा होता है। जैसे बहुत लोग पहले सोचता था कि नॉर्थ ईस्ट में कैंसर के लिए कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है, तो बहुत लोग चेन्नई जाता था, हैदराबाद जाता था। बट अभी गुवाहाटी में या असम में बहुत से कैंसर सर्जन्स है। हमको
चेन्नई या हैदराबाद तक जाने का ज़रूरत नहीं। ड्रीम्स हॉस्पिटल ही नहीं, बाकी हॉस्पिटल्स में भी कैंसर सर्जन्स है, बट हम लोग अभी ड्रीम्स हॉस्पिटल से मैं अटैच हुआ हूँ। मैं एक हैदराबाद से एक कैंसर सर्जन है। हम लोग काफ़ी कैंसर सर्जरी इधर किया हुआ है एंड बहुत से अच्छे आउटकम्स मिला है, जो कि हम लोग पहले जो केसेस था वो भी केसेस हमने मीडिया में पब्लिश किया था। हमारा यही है कि आप अभी चेन्नई तक जाने का ज़रूरत नहीं है, जो भी आपका कैंसर का ट्रीटमेंट है यहीं पे कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत बड़ी जानकारी दी हमारे उत्तर पूर्वी हाँ जी। सेक्टर के लोगों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू। থেংক ইউ। আৰু এজন বিশেষ চিকিৎসক ডক্টৰ ৰমন কুমাৰ, তেওঁ কনচালটেণ্ট ট্ৰমা এণ্ড স্পাইন সার্জন হয়, MBBS पाटना, MS ऑर्थो पाटना। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू हमें समय देने के लिए। वेलकम वेलकम। और ये बात तो बहुत लोग जानते ही है कि पाटना में बहुत अच्छा हड्डियों का ट्रीटमेंट होता है, ऑर्थोपेडिक्स का। बिल्कुल बिल्कुल और अब वो ट्रीटमेंट असम में ही मिलेगा, बिल्कुल मतलब पाटना जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जरूरत नहीं है। तो कितने सालों से है आप यहाँ पर? मेरा यहाँ काम करते हुए ऑलमोस्ट 3 ईयर हो चुके हैं। मैं लास्ट 3 ईयर से गुवाहाटी में काम कर रहा हूँ। यहाँ के लोगों को कोशिश कर रहा हूँ कि जितने से जितने सेवा दे सकूँ। लास्ट 1 ईयर से ड्रीम्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एज ए चीफ कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। हम लोगों ने यहाँ पर बहुत ही जो डिफ़िकल्ट सर्जरी होती है, नॉर्मल हाथ पैरों की हड्डियाँ टूटने के अलावा भी स्पाइन की सर्जरी, जॉइंट रिप्लेसमेंट, जो पेल्विक बोन की फ्रैक्चर हुई, इन सारे तरह की जो है का जो फ्रैक्चर हुआ है पेशेंट का, बहुत सारे पेशेंट इस तरह से आए हैं और हम लोगों ने सक्सेसफुली उनको ट्रीट किया है। पूरा स्टाफ पटना से है आपका? बिल्कुल, मेरा जो ऑर्थो का टीम है वो पटना से है। एंड ईच एंड एवरी प्रोटोकॉल जो हमें वहाँ हम लोगों ने वहाँ सीखा, जो हम लोगों ने काम किया और यहाँ मैं कर रहा हूँ, तो पेशेंट अच्छे रिस्पॉन्स मिल रहे हैं पेशेंट के बहुत ही अच्छे से। बहुत, ये हमारे लिए ही बहुत मतलब सुविधाजनक एक बात है कि पटना अभी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है और सारा ट्रिटमेंट यहीं पर ही मिलता है। और यात তেওঁলোকে যিখিনি চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়ায় সেই চিকিৎসা সেৱাৰ জৰিয়তে বহু ৰোগী ভালো হৈছে। एक उदाहरण मैंने सुना है। मैं अभी इसके रिगार्डिंग एक केस के रिगार्डिंग ही बात करना चाहूँगा। एक अभी हमारे पास पेशेंट एडमिट है, उनका आज दूसरा दिन है ऑपरेशन का। जो है पेशेंट ठीक है, उनके पेल्विक बोन में फ्रैक्चर हुई और पेल्विक बोन में फ्रैक्चर हुई तो क्योंकि वो हाइट से गिरे थे, नॉट ओनली, तो उसको बोलते हैं शेक्रोपेल्विक डिसोसिएशन जैसा। तो जब वो काफ़ी हाइट से गिरने की वजह से हम आपको दिखाना चाहेंगे कि उनकी पेल्विक बोन की हड्डियाँ, एक ये सेक्रल बोन है जिसमें ट्रांसफॉर्मिनल फ्रैक्चर हो रखा है और इलियक विंग की फ्रैक्चर है, साथ में एसिटाबुलम जो हमारा हिप जॉइंट है वो पीछे से भी टूटा हुआ है और आगे से भी टूटा हुआ, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर है उसमें। और इसका इम्पैक्ट यूँ है कि इनका जो S1 वर्टिब्रा है वो ट्रांसलोकेट होकर के L5 के लेवल पे जाकर के अटका हुआ है। इस तरह की सर्जरी अपने आप में एक बहुत ही चैलेंजिंग सर्जरी मानी जाती है हिप बोन की, स्पेशली पेल्विक बोन का फिक्सेशन, क्योंकि इसमें रिडक्शन करना, बोन को अपनी जगह पे लाना और उसे सफलतापूर्वक ठीक करना एक चैलेंज की बात होती है। और ये जो फ्रैक्चर पोर्शन था वो जो ऊपर गया हुआ तो ऑलरेडी अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ चुका है, तो इसको ट्रांससेक्रल प्लेटिंग किया गया है उनका, साथ में इलियक विंग के लिए भी प्लेटिंग किया गया है और ये पोस्टीरियर कॉलम का फिक्सेशन हम लोगों ने सारा पोस्टीरियर से कर दिया है। रिमेनिंग उनकी जो इंटीरियर की पार्ट है उसको हम लोग देख लेते हैं, स्टेबिलिटी के आधार पे फर्दर उसको इंटीरियर से जो है फिक्स कर देंगे। तो पेशेंट फॉर्चुनेटली इस तरह के ऑपरेशन में ऐसा कई बार देखा गया है और एक रिस्क रहता है कि नर्व की इंजरी होने की संभावना रहती है, लेकिन जो हमारे पेशेंट हैं उनके जो रिलेटिव्स हैं वो काफ़ी समझदार हैं और उनको सारा चीज़ों मैंने जब डिटेल से समझाया। इस तरह के पेशेंट मरीज के साथ समस्या क्या होती है कि आप यूँ समझें कि उनका पेल्विक बोन और उनका जो स्पाइन है वो बिल्कुल एक दूसरे से अलग है। जैसे हम अभी बैठे हुए हैं तो हमारा जो है वेट ट्रांसफ़र पेल्विक बोन के थ्रू हमारे स्पाइन पे का जो सारा वेट है पेल्विक बोन पे जा रहा है।
जब ये बायलेटरल दोनों तरफ से इस तरह की फ्रैक्चर होती है तो वो मरीज बैठ नहीं सकता है, क्योंकि जब भी वो बैठने का प्रयास करेगा तो उनका वेट ट्रांसफ़र नहीं होगा नीचे की ओर, वहाँ फ्रैक्चर साइड में उसको पेन होगी। साथ ही साथ में वो जिस वक्त हमारे पास आए थे काफ़ी दर्द में थे। स्लाइड मूवमेंट, मरीज यदि हल्का मूवमेंट भी करेंगे तो उसको बहुत जो है विगरस पेन होती है। साथ में उनकी कैल्केनियम फ्रैक्चर भी थी, जो कि बायलेटरल कैल्केनियम फ्रैक्चर दोनों साथ के हिल बोन की फ्रैक्चर थे, तो उनको मैंने कंजर्वेटिवली किया है। तो जब उनका ऑपरेशन किया, आज जब हमारे पास आई थी और कुछ एक हॉस्पिटल में उन्होंने विजिट किया था, उनको जो है संतोषजनक आंसर नहीं मिला होगा, फिर वो कहीं से उन्हें पता चला तो वो हमसे कंसल्ट किया। मैंने उनका 2 दिन पहले सफलतापूर्वक ऑपरेशन किया। अभी पेशेंट बिल्कुल पेन फ्री है, बहुत ही अच्छे इम्प्रूव कर रही है, किसी तरह का कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। আৰু এই মুহূৰ্তত যিগৰাকী ৰোগীৰ কথা ক'লে, যাৰ এই অৱস্থা হ'লেই তেওঁ এক্সৰে ৰিপৰ্টবোৰ দেখুৱাই দিছে ছাৰে, সেইজন ৰোগীৰ অভিভাৱক আছে। দাদা, আপোনাৰ নামটো? নমস্কাৰ, হয়, মোৰ নাম সুনীল কলিতা। হয়, আপোনাৰ হয়তো পৰিয়াল হয়, যাৰ এই অৱস্থা হৈছে, মিছেজ হয়। আপোনাৰ মিছেছ হয়। হয়। ইয়াত দেখুওৱাৰ আগতে আপুনি বেলেগতো দেখুৱাইছিল? হয়, মই এখন হস্পিটেলত লৈ গৈছিলোঁ। তাত তেনেকুৱা ডক্তৰৰ সুবিধা মই পোৱা নাছিলোঁ। নোপোৱাত মোৰ কলিগ এজনে ক'লে যে এইখন হস্পিটেল হাৰ্ডিৰ কাৰণে খুব ভাল, তেতিয়া মই ইয়াত লৈ আহিলোঁ। ইয়াত আহি পেলাই কেনেকুৱা ৰেছপন্স পালে ছাৰৰ পৰা? ছাৰৰ পৰাতো মোৰ ক'বলগীয়া ভাষা নাই, কাৰণ যেনেকুৱা মোক ছাৰে এতিয়ালৈকে দেখাই আছে, কৈ আছে, মই ভাবোঁ মোৰ কাৰণে ভগৱান। কাৰণ যিজনে মানুহক ছাৰে এইখিনি ট্ৰিটমেণ্ট কৰিছে, পাটনাত নিব লাগে বুলি কৈ দিছিলে, তেনেস্থলতো নিনি কিনে ইয়াত যে ছাৰে সেইটো মোক সাহস দিলে কৰিম বুলি, এইকাৰণে মোৰ কাৰণে বহুত বহুত ভগৱান, মই নমস্কাৰ কৰি গৈছোঁ তেখেতক। নিশ্চয়। আপুনি পাটনাত নিনি ইয়াতে পাটনাৰ গোটেইখিনি সুবিধা হয়, পাইছে? ছাৰৰ কথা শুনি কিনে মই ইয়াত মানে ৰখাটো মই সিদ্ধান্ত লৈ ল'লোঁ। এতিয়া কেনেকুৱা আপোনাৰ মিছেছৰ অৱস্থা? এতিয়াতো খুবেই ভাল মাত কথা দিছে, বা ছাৰে কোৱা মতে 2টা অপাৰেশ্যন হৈ গৈছে, ছাৰে ছাকচেছ হ'ব বুলি কৈছে। মোৰ সেইকাৰণে খুবেই ভাল লাগিছে, মই কি ক'ম আৰু। তেখেতৰ এই এক্সিডেণ্ট এটা হৈছিলেতো, এক্সিডেণ্ট হৈ হ'ল এইটো? হয়, ছাডেনলি পৰি গৈছে তলত। বিল্ডিঙৰ পৰা পৰিছিল? ছাদৰ পৰা? 2 নম্বৰ ছাদৰ পৰা তলত পৰি গৈছিলে। 2 নম্বৰ ছাদৰ পৰা তলত পৰি গৈছিলে? তলত পৰি গৈছিলে। আমি মোটামুটি ছোৱালী 3জনে মানুহ আমাৰ ঘৰত, তেনেকৈ আছোঁ। হঠাৎ পৰি যোৱা দেখি মই আৰু অকলে মই কি কৰিম কওক। তেতিয়া মানে মই বহুত হেৰি কৰি ধৈৰ্য ধৰি মোৰ ওচৰত মোৰ ষ্টাফ থাকে অফিচৰ, তেখেতক ফোন কৰি মাতিলোঁ। আৰু এজন ষ্টাফ অলপ দূৰত থাকে, তেখেতকো মাতিলোঁ। মাতি মেলি আনি এম্বুলেঞ্চ মাতি হস্পিটেলত মই দেখাই আছিলোঁ অলৰেডি। মই আৰু তাকে ৰিকুৱেষ্ট কৰি লৈ গ'লোঁ। তাৰপৰা তাতে মই যেতিয়া ট্ৰিটমেণ্ট বেয়া পালোঁ, বা ক'লে আৰু বহুতে সেইটো ট্ৰিটমেণ্ট নহ'ব তাত, তেতিয়া মই ইয়াত লৈ আহিলোঁ। যি কি নহওক, মানে মই পোনপটীয়াকৈ ক'বলৈ গ'লে এটা অতি বেয়া অৱস্থাৰ পৰা ৰক্ষা পৰিছে আপোনাৰ পত্নী। হয়, এতিয়া কথা পাতিছে? কথা পাতিছে, খোৱা বোৱা ধৰক জোখ চোখ তেনেকৈ খাব দিছে, খাইছে, ভাল লাগিছে। ঠিক আছে, আমি আশা কৰিছোঁ আপোনাৰ ৱাইফৰ অৱস্থা ভাল হওক আৰু ইয়াত ট্ৰিটমেণ্ট কৰি তেওঁ আশু আৰোগ্য লাভ কৰক। আমি ভৱিষ্যতটো ভাল হোৱাটো বিচাৰিছোঁ ভগৱানৰ ওচৰত। আপুনি এইখিনি সময় দিলে ধন্যবাদ। আপোনাৰতো একো অসুবিধা নাই, আপোনাৰ মুখখন ওলালে? মোৰ তেনেকৈ কি ক'ম আৰু, চাওক, ভগৱানে জানো তেওঁক নিচিনা কৰি ৰাখে, বা এই ভাগ্যত যে তেওঁৰ ভগৱানে ৰখাৰ কাৰণেই ছাৰক মোক লগ কৰাই দিছে। সেই মুহূৰ্তত এটাৰ মোক ৰাস্তা দেখাই দিছে ইয়াত আহিবৰ কাৰণে। বহুত বহুত ধন্যবাদ আপোনাক হয়, নমস্কাৰ। কথা কোৱাৰ বাবে। ধন্যবাদ।